Students, in today's video, we are going to start with determination of oxidation number of element in various examples. So, let us start with first example. First example is HCO3 minus 1. यहाँ पे हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. So let us put value. Hydrogen plus 1, unknown number X. 3 oxygen atoms are there, each having minus 2, remaining charge in front of equal sign. So next step, plus 1 plus x minus 6 equal to minus 1. So what did it become? Plus 1 minus 6 minus 5 equal to minus 1. So x equal to plus 4. So इस पहले एग्जाम्पल में कार्बन के ऊपर चार्ज मिलेगा हमें plus 4. Shift towards second example, Na2O2, as it is sodium peroxide. In oxygen carries minus 1 charge instead of minus 2. So 2 sodium atoms are there. So unknown number 2x plus 2 oxygen minus 1, as it is compound, total sum equal to 0. So what we can write here? X minus 2 equal to 0, 2x equal to 2. So what kind of charge you will get on sodium? Plus 1. Agla example, KO2. It belongs to superoxide category. So try to remember, in case of superoxide, oxygen carries minus 1 by 2 oxidation state. So unknown number X, 2 oxygen minus 1 by 2 equal to 0. So X minus 1 equal to 0. तो इस केस में पोटेशियम के ऊपर चार्ज बनेगा plus 1. अगला एग्जांपल NaBH4. यहाँ पे बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है. सो इट बिलोंग्स टू व्हाट टाइप ऑफ कैटेगरी? मेटल हाइड्राइड. And in metal hydride, hydrogen carries minus 1, not plus 1. So accordingly, sodium plus 1, unknown number X, 4 hydrogen, each having minus 1, as it is compound, total sum equal to 0. So what is next step? Plus 1 plus X minus 4 equal to 0, X minus 3 equal to 0. So what is charge on boron in this example? Plus 3. अगला एग्जाम्पल फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम Fe का चार्ज हमें फाइंड आउट करना है. सो इन दिस केस keep in mind water is neutral ligand, so no charge we are going to write for water molecule. NO carries plus 1 and this sulfate carries minus 2. So what we can write here? Unknown number X plus यहाँ पे चार्ज plus 1 minus 2 equal to 0. So what it become? X minus 1 equal to 0. So in this complex Fe के ऊपर चार्ज मिलेगा हमें plus 1. अगला एग्जांपल चेक करो स्टूडेंट. K4FeCN6. यहाँ पे पोटेशियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, अल्कली मेटल कैरीज plus 1, Cn माइनस, साइनाइड कैरीज minus 1 चार्ज. सो व्हाट वी कैन राइट हियर? 4 इन ब्रैकेट plus 1, अननोन नंबर लिखेंगे x. कितने साइनाइड है यहाँ पे? 6, each having minus 1 equal to 0. So what we can write? Plus 4 plus x minus 6 equal to 0, x minus 2 equal to 0. So in this case Fe carries plus 2 charge. अगला एग्जाम्पल, दिस इज ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ CrO2Cl2. तो इन केस में हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. सो लेट अस पुट वैल्यू. अननोन नंबर X, 2 ऑक्सीजन each having minus 2, 2 Cl each having minus 1, total equal to 0. So what did it become? X minus 4 minus 2 equal to 0, X minus 6 equal to 0. So Cr carries what type of charge? Plus 6. Shift towards next example. Again it belongs to coordination compound. यहाँ पे central atom होगा अपना nickel. And what type of ligand attached to nickel? Carbonyl group. So remember, in case of metal carbonyl complexes, metal oxidation number is found to be 0. तो इस केस में हम लोग निकेल के ऊपर चार्ज क्या लिखेंगे? 0. लास्ट सेकंड एग्जांपल, अमोनियम नाइट्रेट. तो इस कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज NH4 plus ion, this is NO3 minus ion. तो in case of NH4 plus ammonium ion, unknown number is X, 4 hydrogen atom, each having plus 1, remaining charge in front of equal sign. So it become X plus 4 equal to plus 1. What we can write then? X equal to plus 1 minus 4. So X equal to minus 3. So in case of ammonium ion, the charge present on nitrogen is minus 3. And shift towards second part of this compound, nitrate ion NO3 minus. तो यहाँ पे नाइट्रोजन अननोन नंबर लिखा मैंने minus X,
3 oxygen atoms each having -2 remaining charge in front of equal sign. So what we can write? X minus 6 equal to -1, x equal to -1 plus 6. So in this case, nitrogen carries what type of charge? +5. आखिरी एग्जाम्पल H2SO5. If we consider as usual, oxygen carries -2 charge, then according to that 5 2s are -10, out of which hydrogen cancel +2. तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड चार्ज क्या मिलेगा? +8. लेकिन आपको पता है स्टूडेंट, सल्फर इज हैविंग एटॉमिक नंबर 16. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन? 2 and 6. So in case of sulfur atom, how many valence electrons are there? 6. So 4, not more than +6. तो यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा. तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया. दिस इज सल्फर हैविंग 2 डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन. सल्फर कैरीज 1 OH group, and what about remaining frame? HOO. So O-O indicate peroxide linkage. यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन -1 कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी -1, बाकी सभी ऑक्सीजन एज यूजुअल -2. So accordingly put value here. 2 hydrogen each having +1, unknown number X. Out of 5 oxygen, 1 2 3 carries -2. So 3 2s are 6, -6 7 8. So as it is compound, total sum equal to 0. So what did it become? +2 plus x minus 8 equal to 0. X minus 6 equal to 0. So what kind of charge sulfur carries? +6. So these are the few important examples from redox reaction जहाँ पे हमने underlying element का charge find out किया.